Two, firstly, we need to correct our conditions. We need to change ourselves. We need to correct our condition. We need to change ourselves. This part might not be very comfortable. It's not comfortable for me to say, and it won't be comfortable for you to hear. Visiting Jamia Bin Nouriya for me is like visiting home. And sitting with you is like sitting with family. Because that's the beautiful thing about knowledge. Al-ilmu rahimun bayna ahlihi. The scholars of old, they would say that knowledge is a bond between its people. All of that work that is being done at Jamia Bin Nouriya Alamiya, from the academics to the administration to even this media production, subhanallah, I really feel people need to come here and experience Jamia Bin Nouriya. Everyone, anyone watching this who has not been here needs to come here and experience it, because they will see what ihsan looks like. ये दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए और सारे वसाइल भी उनकी तरफ हों, तब भी कादिर मुतलक कादिर अला कुल्ली शै वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को बनाया, वो खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज के खालिक वो है। तो इंसान सारे एक तरफ हो जाए, वसाइल सारे एक तरफ हो जाए, आखिर वो इंसानों को और वसाइल को बनाया है किसने? अल्लाह ने बनाया। आप अल्लाह में अपना तवक्कुल रखें, आप अल्लाह में अपना ईमान रखें, आप अल्लाह पर अपना भरोसा रखें। قال الله عز وجل في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات